demography of that region changed over the last many years. You saw terror, social exclusion, economic exclusion taking place, and the society giving its tacit approval or no mass disapproval of such an act. मल्लापुरम के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 70% है. नॉन हिंदू एमपी 1952 से नहीं बना है. किशनगंज के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 65% से ज़्यादा है. 1952 से कोई भी हिंदू एमपी नहीं बना है. Which is what defeats the entire logic of TFR, which says that even though the Muslim population growth has reduced than what it was 40 years back, the rate of decline of the Hindu population is faster than the rate of decline of the Muslim population. So the TFR gap always remains. And this is why the Hindus are disproportionately decreasing. Bengal is staring at a demography which is exactly or near similar. It is approaching the demography which is what it was pre-partition. There is not a single kasbah, village, or an area of in the country where once Hindus have become minority, they have become majority. But there are many areas where Muslims have become minority, they have become majority in the last 5 decades. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ संगम टॉक्स. मेरा नाम प्रदीप भंडारी है. मैं इस वक्त नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी का हूं और पूर्व में मैं एक सिफोलॉजिस्ट और जर्नलिस्ट रह चुका हूं. मैं आपके सामने इस वक्त एक स्टडी मेरी रखना चाहता हूं. जिस स्टडी को मैंने नाम दिया है, आई हैव नेम्ड इट एज डेमोक्रेसीज डेस्टिनीज डेमोग्राफी. मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं और ये जो 2 किताबें मैंने लिखी हैं, ये दोनों किताबें मैंने देश के 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ट्रैवल करके लिखी है. What I will be presenting in front of you is an academic test case of the proposition which I have given in this presentation, that any democracy's destiny is demography. और इसका बात करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं देश के 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पिछले 11 साल में ट्रैवल किया और अभी भी देश के अलग अलग कोनों में ट्रैवल करता हूँ, तो मैं एक लार्जर ट्रेंड देख रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इंडियन डेमोक्रेसी के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो हमारी बदलती हुई डेमोग्राफी रहेगी. ग्लोबली नेशन स्टेट्स को अगर आप स्टडी करेंगे तो ग्लोबली नेशंस का भाग्य भी उस हिसाब से चेंज हुआ जब उन नेशंस की डेमोग्राफी बदली. सो दिस इज व्हाई आई से that as India envisions to be a superpower, and all of us believe in our democracy, but we need to look at a very big threat which will come in front of India's democracy in the long term, which is demography. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए ऐसा ही कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे खोलूँगा आपके सामने, if I will keep, I want to go to the slide 1. जी हाँ, देखिए अभी अभी आपने एक न्यूज़ में केस सुना होगा और वो एक केस जो है वो अल फला यूनिवर्सिटी का था, जहाँ पे एक आतंकी मॉड्यूल हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने पकड़ा था. वहाँ पे एक आतंकी ने सुसाइड कमिट किया और उसके साथ में कुछ आतंकी पकड़े गए. टेरर एक्यूज हैव बीन कॉट. अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी और उसी से मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहता हूँ, that one of the terror accused who was also considered to be the mastermind, Shaheen, जिस लोकेशन से वो पकड़ी गई थी वो लोकेशन धाउज विलेज, फतेहपुर टोगा विलेज, अल फला यूनिवर्सिटी यहाँ आती है और वो पकड़ी गई थी लखनऊ के एक इलाके से. अब मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ?
मैं आपको ये इसीलिए कह रहा हूं कि जिस विलेज से ये आतंकी पकड़ी गई थी, इनफैक्ट वेयर द hotbed of that entire terror module was, she was caught from Lucknow, but the entire hotbed of that terror module was Al Falah University, and Al Falah University comes in the Dawood village in Faridabad. That village demography, if you will see, it is a Muslim majority village. Now, by indicating towards it, I am not pointing that the entire community has given support to the entire act of terror. But what I am pointing towards is कि उस जगह पे पिछले कई समय से टेरर की प्लानिंग हो रही थी, and the entire society in that area, which is a Muslim majority area and a Hindu minority area, was either unaware about it, if we give the benefit of doubt, or did not inform the local authorities about it. परंतु उससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जब ये आतंकी पकड़े गए, फॉर एग्जाम्पल मुजम्मिल के वहां से, उसके दाऊद विलेज के रूम से अलग अलग चीजें मिली, उसका रूम रेंटेड यूनिवर्सिटी के अंदर था, where 2563 kgs of explosives were found, 20 roughly timers were found, 20 batteries were found. The larger plan was huge. किसी ने भी अरेस्ट के बाद में दाऊद विलेज में मास प्रोटेस्ट नहीं किया. नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि अगर कोई भी सोसाइटी के अंदर, मान लीजिए आपके पड़ोस में आपको पता चलता है कि भाई कोई आतंकी पकड़ा गया है, या कोई व्यक्ति जो है आतंक देश में अलग अलग जगह आतंकी हमला करना चाहता था, तो आप खुलकर उसके खिलाफ बोलोगे. बट आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि दाऊद विलेज में किसी ने बड़े लेवल पे खुल के नहीं बोला है. अगर आपने देखा होगा मीडिया के अंदर भी, देयर वाज नो मास प्रोटेस्ट व्हिच टुक प्लेस. एंड इन फैक्ट लॉट ऑफ पीपल केम फॉरवर्ड एंड सेड कि भाई द एक्यूज्ड इज अ डॉक्टर एंड द एक्यूज शुड नॉट बी अरेस्टेड. इन फैक्ट वो भटक गए थे. और यही ट्रेंड आपने जहां से मास्टरमाइंड शहीन शाहिद पकड़ी गई थी, which is again an area in Lucknow, which is लालबाग. और लालबाग के आराम की भी आसपास की भी अगर आप डेमोग्राफी स्टडी करेंगे तो अगेन इट इज हिंदू माइनॉरिटी एंड मुस्लिम मेजॉरिटी. फिर अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से आपने जहां से अलग अलग टेरर रिकवरीज हुई थी उसको भी आप डीपली स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे भी डेमोग्राफी ऐसी है. पर शुरुआत से डेमोग्राफी ऐसी नहीं थी. दाऊद की जो डेमोग्राफी है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 60-70 इयर्स चेंज हुई. और जैसे जैसे डेमोग्राफी चेंज हुई, ये एरिया क्राइम, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन और अब टेरर हॉटबेड के रूप में भी देश में जाना गया. और किसी ने भी समाज के इसमें इसके खिलाफ, जो आसपास रह रहे लोग हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया. और जब ये पकड़े भी गए तो ना लालबाग में मास प्रोटेस्ट हुआ, ना दाऊद विलेज में मास प्रोटेस्ट हुआ. और ये दोनों एरियाज में हिंदूज की जनसंख्या 30-35% से कम है. सो विच मीन्स दैट इज अ हिंदू माइनॉरिटी एरिया एंड इट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया. सो व्हाई एम आई सेइंग दिस? I am saying this because as the demography of that region changed over the last many years, you saw terror, social exclusion, economic exclusion taking place, and the society giving its tacit approval or no mass disapproval of such an act. बिकॉज अगर आप इस जगह की हिस्ट्री पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फतेहपुर का टागा विलेज, इट इज अ 700-year-old सेटलमेंट. और उस 700-year-old सेटलमेंट में इनिशियली इट यूज टू बी अ हिंदू मेजॉरिटी सेटलमेंट जहाँ त्यागी हिंदू फैमिलीज रिसाइड करा करती थी. धीरे 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 जाके यहाँ की डेमोग्राफी ट्रांजिट हुई. यहाँ के ऊपर लोकल सपोर्ट बेस उस ट्रांजिशन ऑफ डेमोग्राफी को आया. पॉलिटिकल पैट्रनेज मिली फॉर वोट बैंक. और उसके बाद जो एक पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, आज वो देश के सामने एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में, जिसको हम कहते हैं टेरर डॉक्टर मॉड्यूल के रूप में सामने आया. सो व्हाट इज द टेक अवे व्हिच आई एम ट्राइंग टू से?
The takeaway which I'm trying to say here is when I speak about disproportionate changes in India's demography, I am not speaking about it from a context of a purely Hindu Muslim context. In fact, I am speaking about it from a multitude of factors where I am proposing that places where Hindus have become minority, you have seen that even not just about social or democratic exclusion, lot of places we have seen that those areas tend up becoming either centers of criminal activity or they end up becoming centers of terror activity, or they are areas which are socially or economically excluded. And unfortunately, individuals in the society do not speak openly against this trend. इसीलिए जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो एक चिंता का विषय है, और वो ये फॉलोइंग है कि अगर आप इस प्रेजेंटेशन के इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे कि देश में मुस्लिम पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट आज की तारीख में है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन द कंट्री टुडे is 48.4%. Yes, you heard that right. 48.4% faster than the Hindu population. इसमें एक आर्ग्यूमेंट दिया गया, एंड इट वाज बाय वन ऑफ दीज इंटेलेक्चुअल्स, कि भाई टीएफआर तो मुस्लिम्स का भी कम हो रहा है, टीएफआर हिंदूज का भी कम कर रहा है, बट द पॉइंट इज नॉट अबाउट द टीएफआर reducing. The point is about the difference in TFR. Because till the time there is a difference in TFR, you will always see that the Hindu population will continue to grow at a slower rate than the Muslim population. So which means what? Which means that you are looking at a societal change which can take place in this country, in our great civilizational Bharat, in the next 4 decades, in the next 3 decades, and in the next 5 decades. और मैं आपको ये छोटे से एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा. फॉर इंस्टेंस, आप मेरठ को लीजिए जो उत्तर प्रदेश में आती है. नाउ मेरठ was roughly around 37-38%. आज की तारीख के अंदर मेरठ इज लेस देन 30% मुस्लिम पॉपुलेशन, अगर आप ओवरऑल इसको उठा के देखेंगे, जो आप डीपली इसमें अगर स्लाइड में अगर आप देखना चाहेंगे. पर अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो आप ये स्थिति देखेंगे कि बाय 2041 मेरठ में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़कर 40% क्रॉस कर जाएगी. फॉर इंस्टेंस, इवन मुंबई, देयर वाज अ टिस रिपोर्ट ऑल्सो, बट माई डेटा सजेस्ट कि जो मुंबई के अंदर आज मुस्लिम पॉपुलेशन है, अगर वही रेट ऑफ ग्रोथ रहा, सो द मुस्लिम पॉपुलेशन इन मुंबई कैन टच एज मच एज 30% इन द नेक्स्ट 4 decades. आज अगर 2011 के सेंसस से आप देखेंगे तो मुंबई के अंदर इट इज नॉट इवन 25%, बट इफ इट कंटिन्यूज इट कैन क्रॉस 30%. ना आप कहेंगे कि भाई डेमोग्राफी हो रही है, लॉट ऑफ पीपल विल से दिस इज अबाउट सोशल एंड रिलीजियस इंक्लूजन. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अबाउट इंक्लूजन, बिकॉज जहां जहां डेमोग्राफी में एक बदलाव आया है, whether it is मुर्शिदाबाद, whether it is मालदा, whether it is मेरठ, whether it is any part of this country, वहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी पीछे जाती गई हैं. मैंने आपको फर्स्ट टेस्ट केस में ये प्रूव किया कि ये ऐसे एरियाज के अंदर एक्ट्स ऑफ टेरर हमें या इलीगल एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पकड़ती हैं, और उसको एक सोसाइटल मास डिसअप्रूवल उस इलाके से नहीं मिलता है. अब मैं आपके सामने ये थीसिस रख रहा हूं कि जब TFR of the Hindu population is lesser than the TFR of the Muslim population, and the Muslim population is growing at 46.4% faster rate than the Hindu population, you are also seeing in many districts in this country and areas in this country which are in the next 4 decades, 5 decades have a possibility from turning from Hindu majority to Hindu minority. But more important in that, जैसे ही ये डेमोग्राफी परिवर्तित होना शुरू होती है, आप जो है एक ट्रेंड देखते हैं विच इज
डेमोक्रेटिक ट्रेंड उन इलाकों के अंदर कम होना शुरू हो जाता है। अब मैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड से दिखाना चाहता हूं, एंड दिस इज वेयर आई कम टू माई नेक्स्ट स्लाइड। यस, देयर इट गोज। लुक एट दिस स्लाइड वेरी वेरी केयरफुली। दिस इज अबाउट टू डिस्ट्रिक्ट्स। ये है दो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, एक है धुबरी और एक है मुर्शिदाबाद। दोनों में मुस्लिम्स की जनसंख्या 65% से ज़्यादा है, और दोनों में पिछले 40 सालों में एक भी हिंदू एमपी 95% या 90% केसेस के अंदर, 90% केसेस के अंदर उस कॉन्स्टिट्यूंसी, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हिंदू एमएलए नहीं हुआ है। विच मीन्स व्हाट, कि जैसे ही मुसलमानों की जनसंख्या मेजॉरिटी होती है एक एरिया में, यू सी रिलीजियस बेस्ड वोटिंग टेकिंग प्लेस। आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान में लार्जर सबसे बड़ा फर्क क्या था? पाकिस्तान का पूरा जो फॉर्मेशन हुआ था, दैट वाज प्योरली ऑन सेपरेट आइडेंटिटी फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। एंड भारत का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया वी आर अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पर जहां इलाकों में हिंदूज माइनॉरिटी में हो जाता है, वहां पे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल किया धुबरी और मुर्शिदाबाद से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हिंदू माइनॉरिटी गेटिंग इलेक्टेड फ्रॉम अ मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट इज 10% और लेस देन 10%। विच मीन्स कि अगर आप कितना भी काम उधर कर दो, issue or work is not a determining factor in that area to win an election or to change political outcomes. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धर्म बेस्ड वोटिंग या रिलीजन बेस्ड वोटिंग अगर इन इलाकों में होगी, तो फिर भारत के जो संविधान की जो मूल धारा है, विच इज डेमोक्रेसी, वो खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि ऐसी रिलीजियस बेस्ड बात तो शरीयत की बात होती है, जो हम नॉन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स में देखते हैं। और ये सिर्फ 2 तक नहीं सीमित है, मैं आपको 4 से 5 उदाहरण देना चाहता हूं। मल्लापुरम के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 70% है। यहां पे नॉन हिंदू एमपी 1952 से नहीं बना है। किशनगंज के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 65% से ज़्यादा है। 1952 से कोई भी हिंदू एमपी नहीं बना है। हैदराबाद के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 45% से ज़्यादा है। वहाँ पे 1984 से कोई हिंदू कैंडिडेट नहीं जीता है। मुर्शिदाबाद के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 60% से ज़्यादा है, कोई भी हिंदू 1952 से नहीं जीता है। विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स कि अगर आप हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जिसमें कहते हैं कि भाई इक्वल राइट्स फॉर ऑल होने चाहिए, जिसमें हम कहते हैं कि भाई अगर माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी का भी उतना अधिकार होना चाहिए जितना मेजॉरिटी का है। तो जब हिंदू इन एरियाज के अंदर माइनॉरिटी में आ जाता है, तो उसके डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन का अधिकार चले जाता है और वो एक नॉन एंटिटी उस इलाके में बन जाता है। वेराज ऐसा हम कॉन्ट्ररी नहीं देखते। विच मीन्स व्हाट? प्लेसेस वेयर हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, you will see even Hindus getting elected, Muslims getting elected, and you see voting based on issue based lines, and you see electoral outcomes changing. वहीं पर जहां हिंदू माइनॉरिटी में हो जाता है, वहां सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के आधार पर ही वोटिंग होती है। तभी किशनगंज में सिर्फ नॉन हिंदू जीतता है, तभी जाके मुर्शिदाबाद मल्लापुरम के अंदर सिर्फ नॉन हिंदू जीतता है। और ये टेंडेंसी लार्जली ज्यादा ऐसे कंट्रीज में होती है जहां शरीयत प्रैक्टिस होती है, धर्म की, रिलीजन की बात होती है। तो मतलब हिंदुस्तान की क्या डेमोक्रेसी को ये डिस्प्रपोर्शनेट डेमोग्राफी जहां बदली है, जहां हिंदू माइनॉरिटी में आया है, जहां उस हिंदू माइनॉरिटी की आवाज नहीं है, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो क्या एक भारत के लॉन्ग टर्म भविष्य पे ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है? पर लोग कहते हैं कि ऐसे बहुत कम इलाके हैं। बट लेट मी टेल यू, डेटा ये सजेस्ट करता है कि अगर अभी की चीज ऐसे ही कंटिन्यू हुई तो बाय 2045 2050 देश में 120 से ज्यादा ऐसे जिले होंगे जहां पे हिंदुओं की जनसंख्या घटकर
70% पे आ जाएगी। अगर यही ट्रेंड्स कंटिन्यू रहा, यही टीएफआर डिफरेंस कंटिन्यू रहा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या घट के 70% इन जिलों में आ जाएगी। अब आप कहेंगे 70% में क्या दिक्कत है? 70% में दिक्कत यह है कि जैसे ही हिंदुओं की जनसंख्या 70% पे कम हो जाती है, एक वर्चुअल पॉलिटिकल वीटो एस्टैब्लिश हो जाता है इन एरिया के अंदर, वेयर द 90% ऑफ द 30% डिसाइड द इलेक्टोरल आउटकम, not the 90% of the 70% in 60% of the time, which means what? मान लीजिए अगर 10 इलेक्टोरल आउटकम है जहां पे हिंदू 70% है और मुस्लिम 30% है, हिंदू मान लीजिए 65% है, मुस्लिम 35% है, 10 में से 6 से 7 इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब जो 35% जहां वोट करता है वही व्यक्ति चुनाव जीतता है, और सिर्फ 4 ऐसे इंस्टेंस होते हैं जहां पे जो 65 या 70% मेजॉरिटी डिसाइड हिंदू करती है वो जीतता है। मतलब एक हिंदू मेजॉरिटी की एक इलेक्टोरल आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी है, जो एक पैरिटी है, वो 65% होने के बावजूद भी 35% माइनॉरिटी से कम है। सो विच मीन्स दैट हिंदूज एज अ कम्युनिटी have a determining impact on deciding the electoral outcome or the political outcome or the future of Bharat till they are more than 80% overall in the country. But as they move towards 70, this is what data suggests, or 65%, their ability to change an electoral outcome or change a political outcome diminishes, and in fact the ability of the 35% is more than that. Let me tell you another data point which is there in this presentation, which we found in the last 10 years of study. So as I said, there is a virtual veto at 30%. But the worrying factor is the following, that when the population of the Muslim community, which is what the data suggests, crosses 22%, out of 10, there are 8 incidents where it will definitely cross 30%. So, if the Muslim population in an area or a constituency has crossed 22%, then the probability of it to cross 30% is 90%. And once it crosses 30%, the probability of it to cross 40% is 95%. Which means what I am trying to say? I am trying to say कि भाई 20% से नीचे there is no definite trend that it will cross or it will move further. But moment the Muslim population is more than 20%, 90% probabilities it will touch or cross 30%. If it crosses 30%, there is 95% probability that it will touch 40%. So which means what? That the ability of the 40% or the 35% to determine the electoral outcome or the political destiny of this country will be more or is more than the majority 70% or 65% Hindus. So Hindus having an equal say in the democratic setup of this country is at 80%, it is not at 50-50%. And this is where you can see from the test cases of places like Malappuram, Kishanganj, Hyderabad, Murshidabad, and various other places which I showed in front of you. And if you see across the border, जो Hindus minority में थे, जो पार्टीशन के बाद में हिंदू स्टेट एंड ऑल पाकिस्तान चले गए, उनको लगा था कि भाई अश्योरेंस के नाम पे आज हिंदुओं की जो जनसंख्या पहले डबल डिजिट में थी पाकिस्तान में, आज वो लोअर सिंगल डिजिट के अंदर आ गई है. And you have never seen a Hindu having a political representation in Pakistan. Why? Because Pakistan believes in Shariat. Pakistan believes in religion. And this is just not to do with Pakistan. What I am trying to put forward here is that wherever the Hindus go in minority, the voting happens on religious lines. And that is what is a threat to India's democracy, which Baba Sahib Bhimrao Ambedkar also spoke about, because his idea of democracy was we the people of India. And pre-independence, it was the separate electorate concept which the Muslim League got for the in order to get the demand of Pakistan,
was precisely what was opposed by all the greats of the freedom movement, from Veer Savarkar to Netaji Subhash Chandra Bose to Sardar Patel. तो क्या ये बदलती हुई डेमोग्राफी अगर ऐसे ही बदलती गई और देश के इलेक्टोरल और पॉलिटिकल आउटकम में एक वीटो एस्टैब्लिश करने का प्रयास 2040-2050 में करा गया, तो क्या ये हमारे देश के लिए एक लॉन्ग टर्म चैलेंज और खतरा नहीं है? ये मैं यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन के जरिए, इस स्लाइड के जरिए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने अभी तक आपके सामने 2 टेस्ट केसेस रखे। पहला मैंने टेस्ट केस ये रखा कि इन इलाकों के अंदर हम देखते हैं इंक्रीज इन इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी एंड अ सॉफ्ट टैसिट सपोर्ट और अ नो मास डिसअप्रूवल ऑफ इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज और एक्ट ऑफ टेरर। दूसरा मैंने आपके सामने ये रखा कि जब जब हिंदू माइनॉरिटी में हुआ है वहां पे रिलीजन के आधार पे वोटिंग हुई है और हिंदू की पॉलिटिकल वॉइस स्क्वीज हो चुकी है एंड रिप्रेजेंटेशन इज नेग्लिजिबल एंड इट इज जस्ट नॉट टू डू विथ हिंदूज इन माइनॉरिटी। मैंने ये भी आपको बताया कि अगर 20% मुस्लिम्स की पॉपुलेशन, इफ द मुस्लिम पॉपुलेशन क्रॉसेस 20%, there is 90% probability that it will cross 30%, and there is 95% probability that if it crosses 30%, it will definitely cross 40%. Which is why I am trying to give you a headline that if this trend continues in the next 4 decades, 3 decades, you will see more than 120 places in this country, districts in this country, which can see Hindus falling to around 70% from more than 80-85% right now. And if they fall to 70%, their ability in deciding the outcome, whether it is on issue based, will be lesser than what is of the minority. So you will see in that area it is not equal representation but disproportionate representation in favor of the minority, which will decide the outcome, which is against the spirit of India's constitution. And this is what you see. Kishanganj, last Hindu MP 1967. Kochar Dhaman, Muslim population 72%, never a Hindu MP. Bahadurganj, Muslim population 68%, no Hindu MP in 40 years. Amor, Muslim population 70% plus, no Hindu MP in 50 years. Thakurganj, Muslim population more than 58%, no Hindu MP in 20 years. Sambal, Muslim population more than 50%, no Hindu MP since 1993, which is at least more 30 years. Dhubri, 75% Muslim population, no Hindu MP in the last 35 years. And Malegaon Central, Muslim population 75% plus, never has a Hindu MP won from there since its formation in 2009. Kishanganj, Kochardham, Bahadurganj, Amor, Thakurganj, Sambal, Malappuram, Dhubri, Malegaon Central, all of these assembly constituencies which has not seen an MLA shifting in either in the last 30 years, 40 years, or since the constituency has been formed. So generally what do those who speak about democracy tell? They say that democracy is about caring for the minorities too. But places where the Hindus become minorities, there is political seclusion of the Hindu community which takes place in all these areas. So it is also against the fundamental pillar of the Indian constitution, which is about giving equal representation and speaking about representation of those who are deprived. So when I apply the same tenets which the pseudo-secularists apply, why are those tenets not applied in such areas? And again, reiterating, because the main thesis and my main headline which I'm trying to say is this: if this trend continues, then you will have more than 100 constituencies in this country which will have the most Hindus reducing to 70% from more than around 80-85% at present, and you will see at least 15 to 18% of the constituencies where Hindus can become minority. So are we speaking about in the next 100 years that if this trend continues, that Hindus who are dominantly majority in this country will become a fleeting majority, or will see their population dipping significantly, and a civilization which has been continuing since the last many thousands of years, is this a threat which this civilization will have in the long term future? And has the time come to look at solutions towards it? How do you address the solutions? But moving towards that, and I am again reiterating, it is not to do with purely uh, from the point of view of religion.
I am speaking about it from the point of view of economic seclusion, social seclusion, political seclusion, and larger security threat, which I began my entire presentation by highlighting those. The next submission which I have in this presentation, which I say that democracy is demography's destiny, is a case study of a state which led India's freedom movement, which gave birth to many freedom fighters from Netaji Subhash Chandra Bose to Shyama Prasad Mukherjee to Gurudev Rabindranath Tagore, which is this beautiful state of West Bengal. Now, look at the demographic trend which is happening in the state of West Bengal. पिछले 10 सालों में हिंदू पॉपुलेशन 2% से डिक्लाइन हुई है, which is one of the fastest seen in any other compared to any other state. Muslim population has increased by 2%. So the decline in Hindu population is directly proportional in Bengal to the increase in Muslim population. The Hindus have become minority in 10 blocks of North 24 Parganas. The Muslim population has crossed at least 30% of the districts in South 24 Parganas. So these are two districts. One is the North 24 Pargana, which you will see on the map, and another is South 24 Pargana. नॉर्थ 24 परगना में आप 10 ब्लॉक में देखोगे जो हिंदूज पहले मेजॉरिटी में थे आज़ादी के बाद, जो माइनॉरिटी में आ गए. साउथ 24 परगना में आप 30% जिलों में ऐसा देखोगे जहाँ मुस्लिम्स की जनसंख्या 40% टच कर दी है. नाउ लुक एट द डेकेडल ग्रोथ ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन इन बंगाल. Between the decadal growth of the Hindu population, which was 21% in the era of 1980, अब reduce होके 10% आ गई है. Whereas the decadal growth of the Muslim population is double that of the Hindu population, which is 21.8%, which is what defeats the entire logic of TFR, which says that even though the Muslim population growth has reduced than what it was 40 years back, the rate of decline of the Hindu population is faster than the rate of decline of the Muslim population. So the TFR gap always remains. And this is why the Hindus are disproportionately decreasing in Bengal and Muslims are increasing in Bengal. But along with that, Bengal being a border state has another tangential data which says that the rate of decline of the Hindu population in border districts of Bengal is directly proportional to the rate of increase of illegal infiltrating activities which have been found on those districts. In fact, the Calcutta High Court just recently gave a very important observation where it asked the Bengal government that why is it not giving 400 kilometers of land which is needed for fencing. So every other places, as I said, the proportionality and inverse proportionality concept is not so stark as much as you see in Bengal. बंगाल में जितना हिंदू पॉपुलेशन बढ़ा कम हुआ उतना ही मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा. और साथ में बॉर्डर जिलों के अंदर जितना हिंदू पॉपुलेशन घटा उतने ही मात्रा से इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बढ़े. तभी जो मैं सबसे बड़े ट्रेंड की बात कर रहा हूं, विच इज व्हाट वरीज, दैट ओवरऑल the minority, which is in particular the Muslim minority, has increased from 8%. Yes, I'm speaking about 8% at a time to 30% plus. So there has been a jump of 22% in less than 5 decades. At the same time, there are many border areas where the Muslim population was less than 10%, 15%. The Muslim population in all those border areas have jumped to 45%. And in all those border areas, you have seen a direct proportional increase of even the illegal infiltrators, which have started to come from different, from other parts of inside these border areas. So what am I trying to say? I am pointing towards a very important trend, and which is that Bengal is staring at a demography which is exactly or near similar, it is approaching the demography which is what it was pre-partition.
of pre-partition. Yes. So before independence, जब हिंदुस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, बंगाल की डेमोग्राफी बंगाल के अंदर exactly is now mirroring that what was it before 1947. And this is what is a very, very important trend which we have to study, because Bengal is a border state. And again, it is, as I started my presentation and said, that it is just not to do with the Hindu-Muslim concept, it is to do with larger Bharati identity. और ये झारखंड के एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझाना चाहता हूँ. संथाल परगना झारखंड के अंदर, जहाँ पे 1951 में ट्राइबल्स की जनसंख्या was 45%. It has now reduced to less than 25%. A tribal state, an entire area, Santhal Pargana, where the tribal population was more than 45%, it has now dipped to less than 25%, which is what my data tells me in Santhal Pargana, in many parts of Santhal Pargana. And this is as per the earlier census, and we extrapolating it to right now. And overall in that state, if you see, ट्राइबल पॉपुलेशन 35% से ज़्यादा थी. कई इलाकों के अंदर वो घट के 24-25% पे आ गई है. वहीं जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो पहले 15-16% थी, वो बढ़ के 27-28-29% आ गई है. अब इससे इशू क्या है? क्योंकि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था शुरुआत में, which is what I told all of you, that it is not to do with the religious question. It is to do with the societal, economic, political and national security question. अब इन सब इलाकों के अंदर, जमतारा के अंदर कोई लोकल स्कूल, जहाँ पहले फ्राइडे को छुट्टी नहीं होती थी, वहाँ फ्राइडे को छुट्टी होना चालू हो गई. गढ़वा के अंदर एक स्कूल में प्रेयर पहले सरस्वती वंदना से होती थी या तो वहाँ के लोकल उससे होती थी, वो चेंज के होके उसमें प्रेयर का स्टाइल चेंज हो गया. सरस्वती पूजा विसर्जन को अलग अलग एरियाज़ के अंदर उस पर उसको चैलेंज किया गया. जो शोभा यात्राएं निकल रही थी, वहाँ पे पथराव शुरू हो गए और हिंदूज अपने घर को छोड़ने लगे. एंड फ्रॉम दिस आई वांट टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट. There is not a single part in this country, not a single village, not a single kasbah, not a single assembly where Hindus, once they have become minority, they have become majority. There is not a single kasbah, village, or an area in the country where once Hindus have become minority, they have become majority. But there are many areas where Muslims have become minority, they have become majority in the last 5 decades. But there is not a single area where Muslims, once they have become majority, they have become a fleeting minority. This is a very, very important data point. कि हिंदू जब माइनॉरिटी हुआ तो देश में कोई कस्बा नहीं जहां वो मेजॉरिटी में हुआ, और मुस्लिम्स जब मेजॉरिटी हुए तो देश में कोई, जिस इलाके में मेजॉरिटी हुए वहाँ कभी भी माइनॉरिटी में वापस से शिफ्ट नहीं हुए. और साथ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, होता क्या है, एक और ट्रेंड देखने को मिला है. मान लीजिए कि आप एक बीच में एक हिंदू मेजॉरिटी गांव है, उसके आसपास हिंदू माइनॉरिटी गांव है या मुस्लिम मेजॉरिटी गांव है. तो आपने देखा है कि 4 से 5 दशक में, और ये मैंने भी अपने डेटा पॉइंट में, जैसे एक चोपड़ा असेंबली आती है बंगाल में, वहाँ पे पहले एक हिंदू मेजॉरिटी गांव को सर्कल किया के आजू बाजू मुस्लिम मेजॉरिटी गांव थे. पिछले 3 से 4 दशक में वो हिंदू मेजॉरिटी गांव हिंदू माइनॉरिटी हुआ. हिंदू माइनॉरिटी होने के बाद कंप्लीट हिंदू वहाँ से चले गए और वो गांव कंप्लीट मुस्लिम मेजॉरिटी गांव हो गया. पर कॉन्ट्ररी, जहाँ देश के अलग अलग, जहाँ मान लीजिए मुस्लिम मेजॉरिटी गांव है, उसके आसपास हिंदू मेजॉरिटी गांव है, तो मुस्लिम मेजॉरिटी गांव ही रहा और उसकी डेमोग्राफी प्रिजर्व्ड रही. ये एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है और जो आपको बता रहा है कि सोसाइटल ट्रेंड क्या है. मतलब अगर एक हिंदू मेजॉरिटी गांव, मुस्लिम मेजॉरिटी गांव अगर हिंदू मेजॉरिटी गांव से भी घिरे रहेगा, तो मुस्लिम मेजॉरिटी गांव की डेमोग्राफी बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होती है.
दशकों तक वो ऐसे ही चलता है। परंतु अगर एक हिंदू माइनॉरिटी गांव, सॉरी एक हिंदू मेजॉरिटी गांव अगर मुस्लिम मेजॉरिटी गांव से घिरे रहेगा, तो वो हिंदू मेजॉरिटी गांव पहले हिंदू माइनॉरिटी होगा और उसके बाद वो प्योरली कंप्लीटली मुस्लिम मेजॉरिटी होके हिंदूज फ्लीट हो जाएंगे। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है जिसमें बता रहा है कि भाई हिंदू मेजॉरिटी गांव जब मुस्लिम मेजॉरिटी गांव से घिरा है तो वो हिंदू मेजॉरिटी प्रिजर्व रहा है। नॉट अ सिंगल। मैं आपके इतना इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट पॉडकास्ट है, आप सब इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स आते हैं, आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए, यू विल नॉट गेट दैट एग्जाम्पल। So why is this happening if we are a democracy which believes in pure true secularism, which we are a democracy believing in true secularism? But why is that not practiced in villages which are Hindu majority, which are surrounded by Muslim majority? Why is the demography there changing? That is something which have to be another data point. These villages have seen more cases against Hindu women than other villages, which means what? मान लीजिए कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी गांव है, उसके आसपास हिंदू मेजॉरिटी गांव है, तो मुस्लिम मेजॉरिटी गांव के अगर आप उस एरियाज की आप एफआईआर रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे लोकल थाने की, तो यू विल नॉट कम अक्रॉस above average crime rate against women vis-a-vis that state. मान लो कि एक स्टेट में महिलाओं के खिलाफ अपराध का रेट एक्स है, वैसे we have to all achieve a rate of zero अपराध against the women, but let's imagine that there is a rate x, the crime rate which is reported, the FIRs which are registered, if that is x of the state, that village which is a Muslim majority village surrounded by the Hindu majority village will also see an x as a rate. बट उल्टा उसी स्टेट में अगर एक्स क्राइम रेट स्टेट का है बट हिंदू मेजॉरिटी गांव के आसपास मुस्लिम मेजॉरिटी गांव है, तो उस पूरे इलाके का क्राइम रेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। और उसी कारण वो हिंदू मेजॉरिटी गांव को पहले हिंदू माइनॉरिटी होता है और उसके यहाँ से हिंदू वहां से फ्लीट कर जाते हैं, बिकॉज द लार्जर सेंसेस की वाई शुड बी, अगर हम अपने घरों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो यहाँ रहने का क्या मतलब है? Because the local policing in those areas become a huge challenge. So those areas become a law and order challenge. So if you remember, I began my presentation by the example of Al-Falah. Because Al-Falah exactly shifted in the last many, many decades demographically, and then policing and law and order became a challenge. Criminal activities increased there, and now you have seen that it's a hub of terror. That is what we've seen. So why has this happened as a trend? So it is just not to do with religious based voting, it is also to do with larger societal implications which is there. And if you will have ghettos or areas in this country where policing, law and order cannot take place just because the demography is completely tilted, हम लोग बड़े colloquial भाषा में बोलते ना, उस पाड़ा में मत जाना, उस इलाके में मत जाना. That has become a colloquial trend. I am coming from Bengal, and there's a assembly called Chopra which has around 267 booths. And you say that bhai, you should not travel to these booths because these are sensitive booths. So why do you call these areas or booths or areas also sensitive? Have you heard this concept in policing? Bhai, these are sensitive areas. Agar if you will take out the data points of all these sensitive areas, you will see that majority of these areas come into sensitive areas. So how come suddenly, if we are truly everything is fine, fit and fine, democratically, socially, economically, politically, why do these areas have policing problems, law and order problems, and more importantly, why do we start calling them as sensitive areas? That is something which is another trend. And this is what the quote unquote secularists do not speak about. So, where are the real threats which are there in the long term societal harmony to this country? Are these places, these innocent Hindu minority villages, which are surrounded by Muslim majority villages, see these areas being declared as crime, as sensitive zones where crime rates also increase, and where local policing also becomes a challenge, and the people in a very colloquial language say कि यार वहाँ पे इस बजे के बाद मत जाना, 7 बजे के बाद मत जाना, 6 बजे के बाद मत जाना. Also, I will give you another example. You will not see a scenario where there is acceptance. Let's imagine an area which is a Muslim majority area, and you will not see an acceptance of that place appreciating or accepting to, let's say there are 10 houses, 8 are that
of Muslims and 2 are of that Hindus. You will see that 10 of those 10 houses becomes either of the Muslims, and the Hindus have to leave those 2 houses. You have 10 may say 9 times the incident is that those 2 houses of the Hindus have to be left and they flee to some other place. Now flip this. 8 houses of the Hindus and 2 houses of the Muslims in the same lane. You see for decades it remains same, there is no issue. And this you can try out anywhere. I give you a simple example. Leave the very hardcore data which I am trying to tell. You go to any part. If you live in Delhi, go to any part or part of Delhi which has this lane. If you live in Mumbai, go to that lane. Go there and observe that over 2 to 3 decades. 10 8 is to 2 ratio, when that 2 is a Hindu, becomes 10 is to 0, whereas 8 is to 2 ratio, when that 2 is a Muslim houses, it remains 8 is to 2. This is a trend which is there. If somebody can contradict me, I'm very well there to appreciate and accept this. So this is what I was speaking about, that you see state-run schools are pressurized in Jamtara that you should shut on Friday because 70% of the children there are Muslims, and even around 100 school departments were asked to change things. And in fact, the pressure is such of the administration that the administration accepted that Sunday will not be the holiday, it will be Friday which will be the holiday. So again, the administrative decisions also in those areas start to getting influenced by the religious choices. But that is not the scenario when the Hindus are in majority. Nowhere have you seen कि भैया ट्यूसडे को हॉलीडे करना है, हमें चेंज कर दो. गिव मी एन एग्जाम्पल ओके लेट मी गिव मी एन एग्जाम्पल इन सच एरिया वेर से कि भाई ट्यूसडे को हॉलीडे परमानेंटली करेंगे सोसाइटी. हैव यू सीन हिंदूज डिमांडिंग दैट? रेयरली. इट माइट बी अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स, बट जनरली एज अ ट्रेंड, नो. But you will see this happening, which is where I say that societal, economic, political 360 degree, it completely goes through a change. And when there is a veto established on the democracy of this country beyond 30-35%, I say a virtual veto at 30 and an absolute veto at 45, then if you remember, there were many leaders colloquially used to say कि भाई in 5 decades, 6 decades, we will see हम लोग गद्दी पाएंगे. Jinnah used to speak about Muslim representation. Is there a larger, I'm not saying in next 1 decade, 2 decade, but in the next 4 decades, 5 decades, is there a larger ploy, which if you recall PFI 2047, there was an entire document which was released, we will want to see a Muslim prime minister around 2047, that PFI document was there. Are we looking at that seriously? Lot of forces in this country seriously working towards that long term, which we have seen in different parts of the, they will bracket all of this in the garb of, liberalism. But my counter question to such liberal arguments is, why those liberal affirmations or submissions are not seen as outcomes for the minorities which are the Hindus in those areas? Give me one example and I will believe in it. One example, I will not get a single example. इसीलिए अब मैं towards the end मैं एक और पे आना चाहता हूँ. So जैसे कि मैंने कहा कि ये question, it's not about the Hindu-Muslim question, it is about the larger destiny of Bharat. Because we all admit that Bharat is Bharat because it is Hindu majority, and that is where I say that we are continuing to be a democracy because we are a Hindu majority country. And I say that democracy is demography, is destiny. But as I speak, there are 9 states and UTs where Hindus are already in minority. अब मैं एक और केस लेना चाहता हूँ. इफ यू रिमेंबर, असम चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो असम मुस्लिम मेजॉरिटी बन जाएगा. अगर मैं इसी पॉपुलेशन को एक्स्ट्रापोलेट करूं, अगर एक घुसपैठी है वो जिस तरीके से हटाया जा रहा है असम के अंदर, वी आर सीइंग अ ह्यूज ड्राइव. आई विल टेल यू व्हाई. अगर मैं ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करूं, 1971 हिंदू 72%, 2011 दे हैव रिड्यूस्ड टू 61%, और अगर यही और नीचे चलता गया तो by 2041-42 they will go less than 50%. So Assam, which is a Hindu majority state, will shift from, or can shift, if this population trend continues,
from 61 percentage, 62 percentage Hindus right now to less than 50 percentage Hindus right in the long term future if this trend continues, because the rate of growth of Muslim population in the last between 2001 to 11 when the UP was in charge in Assam was 10.98 percentage. 10.98 percentage. So, what are my overall observations? My overall observations are following. A, that as the demography shifts, it impacts our democracy massively. Votes are based on religious lines, economic development takes a backseat, constitutional values are challenged because right to life under Article 21 is a fundamental, comes in the basic structure of Indian constitution, and at the same time the right to freedom of expression is of the minority in that area, which is the Hindu, in those villages which is the Hindu, becomes a big challenge. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी की डेस्टिनी हमारी डेमोग्राफी है. अब लोग पूछते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है. आज़ादी के बाद से पहली बार समाज में इसके बारे में चेतना जागृत हुई है. The Honorable Prime Minister has categorically spoken about the National Demographic Mission. He's also spoken about removing the illegal infiltrators. The society has to come up and think about solutions after illegal infiltrators are identified. Is Ghar Wapsi a solution? Is there some other solution? I believe that the society has to explore solution and accept the most practical solution and accept it at a mass scale. Because if we want to protect who we are as Bharatiya, we definitely need to protect against the disproportionate change which is happening at many parts of this country of our demography, because demography of Bharat is the most important determining factor to decide the long term democratic future of Bharat. With this line, I conclude my presentation. I hope, मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने इस संगम टॉक्स की एकेडमिक प्रेजेंटेशन में रख पाया. अगर आपको मुझसे कोई सवाल है ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, और एक बात ज़रूर आपकी लाजमी कि आप सल्यूशन क्यों नहीं दे रहे. मैं इस टॉक के ज़रिए आपके सामने एक इस समस्या को रखना चाहता हूँ जो अब ग्लेरिंग बनती जा रही है. सल्यूशंस हम सबको मिलकर एक्सप्लोर करने हैं. कोई कहता है घर वापसी है, कोई कहता है कोई दूसरा सल्यूशन है, कोई कहता है इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को हमको हटाना है, विच इज़ 100% नेसेसिटी. But the biggest point is that any solution has to be accepted by the society at large, because once the society accepts a solution and participates in a solution, that is only when a challenge is addressed by a nation. And we as Bharat cannot let our long-term democratic future be challenged by disproportionate demographic changes which are taking place at some parts of the country. Namaste.